Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, have launched the world's largest cooperative grain storage plan in India. It aims to build 700 lakh tons capacity in 5 years, and that will reduce the farmer losses and offer storage credit and better selling options. So hello everyone, welcome to the Apti Plus Academy of Civil Services, a premier organization for preparation of civil services exam. In today's News in Focus video session, we'll discuss about world's largest grain storage plant and the cooperative sector details. So it is relevant for the GS paper 2 and also for the prelims. It talks about the decentralization of democracy, devolution of power and finances up to the local levels and challenges therein. It talks about the Panchayati Raj and the current affairs. So once we have seen the relevance to the examinations, let's jump to the context. So Prime Minister recently inaugurated or launched and laid the foundation stone for several key initiatives. One of them is pilot project of the world's largest grain storage plant in cooperative sector in 11 PACs, that is primary agricultural credit societies across 11 states. The second initiative is he also laid the foundation for an additional 500 PACs for the constructions of godowns and other agricultural infrastructures nationwide. And third initiative is a project for computerization in 18,000 PACs across the country, right? So Prime Minister Narendra Modi talked about various initiatives taken by the government in the last 10 years, especially for cooperative sectors. He talks about the vision of the government of सहकार से समृद्धि, इन कोऑपरेटिव से प्रॉस्पेरिटी कैसे आती है. तो विजन ऑफ सहकार से समृद्धि emphasized, and specifically the creation of a specific ministry for the cooperative sector was highlighted, which was created in 2021. And through this separate ministry, there are various efforts by government which are made to strengthen the cooperative in India. Now let's jump to understand the world's largest grain storage plant in the cooperative sectors. So a total of 1.25 lakh crore investment has been envisaged. So it will involve an investment of this much amount. Under this program, as we already talked about this, 700 lakh tons of storage capacity will be created in the 5 years, in the next 5 years, right, in cooperative sectors. So what will be done? इन्वेस्टमेंट में स्टोरेज कैपेसिटी कैसे क्रिएट की जाएगी? सो कंस्ट्रक्शन ऑफ thousands of godowns and the warehouses, and it will also augment the storage infrastructure in the country. यानी कि जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी. सो इट हेल्प द फार्मर्स टू एलिमिनेट लॉसेस. देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आप पिक्चर में, in the absence of storage facility, farmers are forced to keep their produce in the open. So in such calamities or in such climatic conditions like rainfall हो गया या कुछ और condition हो गया, तो the food is spoiled, right? तो farmer incur heavy losses. So if the storage facilities are there, such losses would be eliminated due to the storage issues. तो godowns or warehouse में farmers store कर पाएंगे, and they will also able to get the institutional credit against the stored produce, and they can sell their item where market prices are remunerative. So now let's quickly understand what is cooperative sector. A cooperative society को पहले समझते हैं. What is this? It is a voluntary organization which aims to fulfill the common goals, common economic interests through self-help and the mutual assistance. So voluntary association of people for shared economic goals. ठीक है. कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इंडिपेंडेंस एरा से पहले से भी थे, लेकिन स्पेशली वी टॉक अबाउट आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो देयर इज वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच वी नीड टू रिमेंबर, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011. So it recognized the right to form cooperative societies. So now the right to form cooperative society is a fundamental right that is under Article 19, right? So along with making fundamental right, it also introduced a new article in Directive Principles of State Policy, that is Article 43B, where it states
that state shall endeavor to promote the cooperative society and their professional management. ठीक है, तो DPSP में भी है ये. It also the same 97th Constitutional Amendment Act added a new part in the Constitution of India. The part name is 9th B and it is titled the Cooperative Society. Right? So hence this part focuses on the cooperatives and the related article in the Constitution for these cooperative sectors are Article 243ZS to Article 243ZT. Right? So as we already discussed previously, in 2021 one independent ministry was created to oversee the cooperative affairs. The name of the ministry is the Union Ministry of Cooperation, and previously such functions were overseen by or monitored by the Ministry of Agriculture. Correct? So now let's quickly understand the types of cooperative society. Not important types of cooperative society, बट एक तरह से फिलर के काम आएंगे आपके मेंस एग्जामिनेशन में. मार्केटिंग, हाउसिंग, क्रेडिट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं. हाँ, अभी एक रिसेंटली जो करंट अफेयर में एक न्यूज़ है वो आप प्लीज़ रेफर करें. इंडिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस और पास्ड एन एक्ट नेम्ड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स अमेंडमेंट एक्ट 2023. तो ये वाला एक्ट है, आप इसके कुछ प्रोविजंस जरूर देख लें. ठीक है. So now let's talk about little about the Indian context. Currently इंडिया में बात करें तो देखो, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट. ठीक है, वी मस्ट एग्री दैट, जो फैक्ट है. राइट? और करेंटली सो एज ऑफ 24 नवंबर 2023, यानी कुछ महीने पहले तक, द टोटल नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया आर 7,94,866. Right? So this collective strength of agricultural cooperatives, it offers various benefits to the farmers. तो benefits क्या हैं और related challenges क्या हैं वो भी discuss कर लेंगे हम. So let's talk about the benefits first. One is marketable surplus. देखिए क्या होता है cooperative farming में, small जो farmers होते हैं उनकी small fragmented lands होते हैं, they come together, so they have access to more lands and resources. They can transport and market their produce on a bulk basis. ठीक है, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आती है. सो दे कैन कंट्रोल सप्लाई एंड मार्केटिंग चैनल्स, दे रिड्यूस देयर कॉस्ट, दे एक्सपेंड देयर मार्केट रीच. राइट? तो ये उनको एक बेनिफिट मिल जाता है. नाउ दे आर कॉम्पिटिटिवनेस फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर्स जो थी कम होती थी इनिशियली ड्यू टू द हायर कॉस्ट एंड मार्केट रीच कम होती थी उनकी, इट इंक्रीजेस. राइट? So they have collective voices, cost savings जो हमने बात करी, and they can find better prices in cooperatives, right? And they have also influence on the government interactions, right? Like interaction, they streamline क्योंकि collective है, right? So उनके पास bargaining power भी है, and they have more say to streamline the issues related to the tax collection, distribution of subsidies, right? So overall ये इनको benefit मिलते हैं. For example, मोर बेनिफिट्स अगर हम देखें तो साथ में आते हैं तो दे आर शेयरिंग देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, दे शेयर नॉलेजेस, अलॉन्ग विद दैट देयर आर एक्सेस टू द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑन ए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. राइट? सो ओवरऑल इनकम जनरेशन राइजेस, प्रॉफिट भी बढ़ते हैं. राइट? सो दीज आर ऑल आर द बेनिफिट्स. सो बेनिफिट्स आर देयर बट देयर it is not immune, the cooperatives are not immune to the concerns or the challenges. देखिए पहला चैलेंज है रेगुलेशन या मॉनिटरिंग का या सुपरविजन का. फ्रेगमेंटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है. ठीक है, सेंटर स्टेट का एक ड्यूअल कंट्रोल होता है तो ऑटोनॉमी इश्यूज भी आते हैं. ठीक है, गवर्नेंस और मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत पुअर होता है एंड मिसमैनेजमेंट भी रहता है. देयर चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड लीड टू द फेलियर ऑफ द कोऑपरेटिव्स. अब क्रेडिट तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलता है लेकिन इसमें भी एक रिस्क है. ठीक है, एसएमईज को, इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ही लिमिटेड होती है. ठीक है, सो देयर इज अ चैलेंजेस ऑन द पार्ट ऑफ बैंक्स, अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स टू मैनेज देयर क्रेडिट रिस्क. अगेन टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करें तो फंड की वजह से या फिर इन्वेस्टमेंट की कम होने की वजह से they do not generally invest in the modern technology. That is not true for all cooperative but for especially for small cooperatives. So जो competitiveness है वो कम हो जाती है इनकी. ठीक है, और जो भी देखो फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स भी होते हैं जैसे हमने डिस्कस किए थे पहले टाइप्स में, तो
फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स जो लोन वोन देते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, दे आर इन कॉम्पिटिशन विद कमर्शियल बैंक्स, फिनटेक कंपनीज, ठीक है। तो कस्टमर रिटेंशन इनके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑफर अट्रैक्टिव होते हैं दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हैं। तो कंसर्न और बेनिफिट्स हमने डिस्कस कर लिए। See, there is one more initiative, one announcement regarding the All India Test Series program of FT Plus Academy of Civil Services named Nishchay. This is for the UPSC aspirant who are appearing for prelims 2024 examination that is going to held in May this year. राइट ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने तैयार की है टेस्ट सीरीज और हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हैं 4900 प्लस 4900 राइट। सो 10 रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी आपको जो आपको हेल्प करेंगी टू एनालाइज योर सेल्फ बेटर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज। और इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद क्वालिटी, योर मनी विल बी रिटर्न, राइट। सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक रियलिस्टिक एग्जाम सिमुलेशन को एक्सपीरियंस करने की, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने की और थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट के साथ अपने आप को कम्पीट और कंपेयर करने का, राइट। So to register for this test series shortcut to the confusions of prelims. So confusion आपको clear करने हैं जो भी prelims से related है, तो this is a shortcut. This test series is a shortcut. You can either visit the link given in the description or you can scan the QR code which is appeared on the screen here. Right? So let's now jump to the previous year questions of prelims that was appeared in 2017. देखिए local self government के बारे में पूछ लिया, सीधा क्वेश्चन। LSG can be best explained as an exercise in federalism. जो ऑप्शंस दिए हैं वो आप एक बार देख लें थंब रुक के, राइट। फेडरलिज्म, डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन ये भी क्लियरली रॉन्ग है। फेडरलिज्म जनरली इन्वॉल्व सेंटर एंड स्टेट। तो ए और बी में मोर अप्रोप्रिएट की बात करेंगे। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सो द आंसर वुड बी B. The correct answer would be B. Right? So that's it for today. So thank you all for joining today's News in Focus. हमने करंट अफेयर्स भी डिस्कस किए, स्टैटिक पोर्शन भी क्लियर किया और उसके कुछ प्रोविजंस देखे, DPSP, फंडामेंटल राइट्स के और भी प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशनल, वो दिखे। So I hope this will be useful for your upcoming UPSC and state PCS exams. And now stay tuned for more educational content and information and keep visiting the FT Plus YouTube channel. Until then, stay tuned, keep learning and keep watching. Thank you for watching. Signing off.